See, last time we have seen that all the definitions, these 7 definitions we have seen. Okay, now let us see the next concept, that postulate and axioms. Okay, postulates and axioms देखेंगे कि axioms and postulate होता क्या है. Starting with his definition, Euclid assumed certain properties which were not to be proved. कुछ ऐसे स्टेटमेंट है कि जिसको प्रूफ नहीं किया गया है ना, वो सिर्फ एक स्टेटमेंट है. ओके, these assumptions are actually obvious universal truth. उसके जो भी assumptions थे वो एक्चुअल में क्या थे, एक यूनिवर्सल ट्रूथ थे. ओके, it is the obvious universal truth. So he divided them into 2 parts. तो उस स्टेटमेंट्स को उसने 2 पार्ट्स में डिवाइड किया. कौन से 2 पार्ट्स? देखो, उसके assumptions को उसने 2 पार्ट्स में डिवाइड किया. वन है axioms एंड सेकंड इज postulates. देखो ये इंपॉर्टेंट है, ये टॉपिक ये समझना इंपॉर्टेंट है. देखो क्या बोला है उन्होंने, स्टार्टिंग विथ हिज डेफिनेशंस, यूक्लिड एज्यूम सर्टेन प्रॉपर्टीज. उसने कुछ प्रॉपर्टीज एज्यूम किया है ना, विच वेयर नॉट टू बी प्रूव, कि जो प्रूफ नहीं किया है. बट दीज एजम्पशंस आर एक्चुअली ऑब्वियस यूनिवर्सल ट्रूथ. ओके, एंड ही डिवाइडेड देम इनटू 2 टाइप्स. उसको 2 टाइप्स में डिवाइड किया, एक एक्सियम्स एंड एक पोस्टुलेट्स. So he used the term postulate for assumptions that were specific to geometry. तो postulate सिर्फ geometry से related जो assumptions थे उसको उन्होंने कहा गया postulate. Okay, and common notation often called as axioms, on the other hand, were assumptions used throughout the mathematics, not specified like to geometry. और axioms जो है वो जो नोटेशंस थे, वो जो स्टेटमेंट थे, वो थ्रू आउट द मैथमेटिक्स यूज हुआ है ना. वो पर्टिकुलरली ज्योमेट्री के लिए नहीं है, थ्रू आउट द मैथमेटिक्स. इट इज इन ज्योमेट्री आल्सो, अलजेब्रा आल्सो. ओके, पर पोस्टुलेट ये जो वर्ड है, ये वर्ड स्पेसिफिक ज्योमेट्री में ही एजम्पशंस किया गया है. अंडरस्टैंड? अगेन मोर डिटेल इट इज गिवन इन द अपेंडिक्स फर्स्ट. सम ऑफ द यूक्लिड्स एक्सियम्स not in his order are given below. Okay, उसके some of the axioms यहाँ पर given है. So let us see what are that axioms, Euclid's axioms. Okay, so these axioms are not concerned with the geometry, it is throughout the mathematics. Okay, not particular to the geometry. तो वो 7 axioms कौन से हैं? तो first axiom है things which are equal to the same things are equal to one another. ओके, जो 2 चीजें एक दूसरे से इक्वल है, वो the things which are equal to the same thing are equal to one another. Let us understand this concept. Suppose this is one line segment, this is second, and this is the third. Okay, now how to understand this? Look, things which are equal to the same thing are equal to one another. Suppose this AB and this CD, and this is the PQ. Suppose AB is equal to PQ, and also we can say that CD is equal to PQ. Okay, AB is equal to PQ and CD is equal to PQ. Then what we can say, AB and CD both are equal. Then what we can say, AB and CD both are equal. So this is the meaning of the first statement. This is the meaning of the first statement, that things which are equal to the same things are equal to one another. Understand?
Understand this property axiom? Have you understand? Things which are equal to the same things are equal to one another. Okay. Now second thing, if equals are added to equals, the whole are equal. Means equation, you know that equations have you solved? X plus 2 is equal to 5. Suppose this is the equation. Okay. If equals are added to equals, then whole are equal. Suppose here also, if we add one value, so same value we will add here. Okay. Understand now? Then here we can say x plus 4 and here we can say 7. Both are equal. Balance method, जो हमने बैलेंस मेथड यूज किया था, सेम एज यहाँ पर वही उन्होंने जो प्रॉपर्टी 2 है, इफ इक्वल्स आर एडेड टू इक्वल्स, द होल्स आर इक्वल. अंडरस्टैंड? सपोज two values are there, two values are equal. Suppose 5 is equal to 5. If we add plus 2 here, okay, and plus 2 here, here 7 and this 7, so these both values are also equal. Understand? If equals are added to equals, the wholes are equal. Wholes means what? Whatever the sum, see this sum, it is also equal. If equals are subtracted from equals, the remainders are equal. If suppose two values are equal, for example, A is equal to B. Understand? For example, A is equal to B. If suppose we subtract the same value, A minus C and B minus C, same value we are subtracting, then what we can say, these both values are also equal. Same as if suppose A is equal to B, what we can say, equals are added. Suppose A plus C and B plus C. If same value we are going to add, अगर हम same value add कर रहे हैं तो हम क्या बोल सकते हैं, A plus C is equal to B plus C. आया समझ में? जो स्टेटमेंट नंबर 2 है उसका एक्सप्लेनेशन ये है कि अगर सपोज दो वैल्यूज इक्वल है, A और B इक्वल है, इसमें अगर हम सेम वैल्यू ऐड कर रहे हैं, है ना, तो जो भी सम आ रही है वो भी क्या होती है, द होल आर इक्वल. ठीक है. सेकंड स्टेटमेंट भी वही देखो, इफ इक्वल्स आर सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम इक्वल्स, द रिमाइंडर्स आर आल्सो इक्वल. अंडरस्टैंड? फोर्थ स्टेटमेंट व्हाट इट इज, थिंग्स which coincide with one another are equal to one another. देखो एक दूसरे के ऊपर जो coincide होती है, जैसे कि हम बोलते हैं suppose AB exactly coincide on this CD. If we place this CD on AB, AB is coincide on CD, or we can say exactly match. What is the meaning of this coincide? Exactly मैच. अगर हम ए बी को सी डी के ऊपर रखेंगे तो वो क्या हो रहा है, एग्जैक्टली मैच हो रहा है ना, एग्जैक्टली कॉन्साइड हो रहा है. देन व्हाट इज द स्टेटमेंट, थिंग्स व्हिच कॉन्साइड विद वन अनदर आर इक्वल टू वन अनदर. तो वो दोनों चीजें क्या होती है, वो दोनों ही इक्वल होती है. मींस ए बी इज इक्वल टू सी डी. अगर ए बी और सी डी दोनों एक दूसरे के ऊपर कॉन्साइड हो रही है, एग्जैक्टली मैच हो रही है, तो दोनों की लेंथ क्या होगी, obviously it is equal to. Understand? So this is the proper the exam number 4. What is the exam number 5? The whole is greater than the part. The whole is greater than the part. For example, if you consider that this is one circle, this is one circle. Suppose इस सर्कल के हमने 2 पार्ट्स कर दिए. ओके, इस सर्कल के हमने 2 पार्ट्स कर दिए. ओके, now the whole is greater than the part. Yes, this whole value is always greater than the part, right? Whole we can say it is 1, and this part what we can say, 1/2, which will 1/2.
Yes, whole is always greater than the Okay. part of it. Okay, whole is always greater than the part. So this is also universal truth, this axiom. Then 6 point, things which are double of the same things are equal to one another. Things which are double of the same things. Like suppose अगर आपने एक लाइन सेगमेंट लिया ए बी, ओके, अगेन ए बी का डबल अगर हमने लिया, डबल ऑफ इट, double of this AB. If we add this double, okay, then what we can say, the things are double of the same thing are equal to one another. Things which are double of the same thing. देखो ये दोनों, look, this AB and this CD and this AD, what we can say, AD is double of, AB is double of this AB and CD. Okay, AB and CD. Then what we can say, this AB is equal to CD. Understand? Then both the values will be equal. Things which are double of the same things are equal to one another. Understand this property? Things which are double of the same things are equal to one another. Now 7 number property, things which are halves of the same things, means half. What the meaning of this? Half. Things which are half of the same things are equal to one another. Means suppose if we take two parts, suppose here half of this AB, it is suppose half of this AB, it is this AO, and half of this AB, it is also equal to OB. Okay, for example, the things which are half of the same things are equal to one another. Then what we can say, these half parts are also equal. Means we can say that AO is equal to OB. Understand? Half part, this half part and this half part of the same thing. AB के दो हाफ पार्ट है जैसे कि OA और OB. तो इस प्रॉपर्टी से हम क्या बोल सकते हैं कि ये जो हाफ पार्ट है वो भी एक दूसरे को क्या होते हैं, इक्वल होते हैं. AO is equal to OB. Understand? Means these are the very simple properties. These are the very obvious properties. Okay. Sometimes we think that this is also can be a property. हम ऐसे सोचते हैं कभी ये भी प्रॉपर्टी हो सकती है. तो ऐसे ही सिंपल प्रॉपर्टीज है कि जो ऑब्वियस है. ऑब्वियस मींस मतलब हम बोल ही सकते हैं कि हाँ ये तो होने वाला है ना. जैसे कि ये तो गिवन ही है, जैसे कि थिंग्स विच आर हाफ ऑफ द सेम थिंग्स. अगर सेम थिंग के एग्जैक्टली हाफ पार्ट्स होंगे तो वो हाफ पार्ट्स एक दूसरे को इक्वल होंगे. तो सेम प्रॉपर्टीज है ये. तो ये जो स्टेटमेंट्स थे, जो एजम्पशंस थे उसके, वो एक्चुअली एक ऑब्वियस यूनिवर्सल ट्रूथ है. दीज आर द ऑब्वियस यूनिवर्सल ट्रूथ एंड दैट प्रॉपर्टीज आर यूज्ड थ्रू आउट द मैथमेटिक्स. पूरे थ्रू आउट द मैथमेटिक्स में ये नोटेशन, कॉमन नोटेशन यूज हुए. सो दिस कॉमन नोटेशन रेफर टू मैग्नीट्यूड्स ऑफ सम काइंड. द फर्स्ट कॉमन नोटेशन कुड बी अप्लाइड टू प्लेन फिगर्स. देखो फर्स्ट कॉमन प्रॉपर्टी प्लेन फिगर्स के लिए अप्लाई हो रही है. ओके, फॉर एग्जांपल इफ एन एरिया ऑफ अ ट्रायंगल इक्वल्स द एरिया ऑफ अ रेक्टेंगल. जैसे कि एरिया ऑफ ट्रायंगल और एरिया ऑफ रेक्टेंगल दोनों इक्वल है. देन व्हाट वी कैन से, एरिया ऑफ रेक्टेंगल इक्वल्स टू द दैट ऑफ स्क्वायर, देन द एरिया ऑफ ट्रायंगल इज आल्सो इक्वल टू स्क्वायर. अंडरस्टैंड? बाय दिस प्रॉपर्टी देखो एक एग्जांपल दिया उन्होंने कि एरिया ऑफ ट्रायंगल और एरिया ऑफ रेक्टेंगल दोनों इक्वल है. देखो इस चीज को हम समझते हैं इस तरह से, एरिया ऑफ ट्रायंगल एंड एरिया ऑफ रेक्टेंगल इक्वल है. ये फर्स्ट थिंग गिवन है. ठीक है. देन व्हाट दे गिवन,
and the area of rectangle equals to the square. Area of rectangle equal to area of a square. Okay, again what they are giving, again area of a triangle, area of triangle is also equal to area of square. Okay, देखो इस प्रॉपर्टी से हम ये बोल सकते हैं कि अगर एरिया ऑफ रेक्टेंगल स्क्वायर के बराबर है और एरिया ऑफ ट्रायंगल भी अगर स्क्वायर के बराबर है, तो हम क्या बोल सकते हैं इसके ऊपर से कि एरिया ऑफ ट्रायंगल और एरिया ऑफ रेक्टेंगल दोनों ही इक्वल है. द थिंग्स व्हिच आर इक्वल टू, देखो वापस एक बार वो प्रॉपर्टी देखते हैं. थिंग्स व्हिच आर इक्वल टू द सेम थिंग्स आर इक्वल टू वन अनदर. तो वो सेम थिंग क्या है यहाँ पर है, वो सेम थिंग स्क्वायर, एरिया ऑफ स्क्वायर. इस सेम थिंग को ये दोनों ही अलग अलग जो एरिया है वो इक्वल है. इसका मतलब क्या हुआ कि ये दोनों ही एरिया जो है, एरिया ऑफ रेक्टेंगल और एरिया ऑफ ट्रायंगल, ये भी इक्वल है. अंडरस्टैंड? ओके, नेक्स्ट. Magnitudes of the same kind can be compared and added, but magnitude of different kinds cannot be compared. देखो सेम कैटेगरी के होंगे तो हम उसको कंपेयर कर सकते हैं. जैसे कि यहाँ पर एरिया बोला गया है तो आप एरिया को कंपेयर कर सकते हो, पर आप एरिया और पेरीमीटर को कंपेयर नहीं कर सकते हो, या फिर एरिया को या वॉल्यूम को कंपेयर नहीं कर सकते हो. ऐसा समझ में? मतलब सेम काइंड ऑफ मैग्नीट्यूड होगा तो आप उसको कंपेयर कर सकते हो, पर डिफरेंट होगा तो उसको कंपेयर नहीं कर सकते हो. जैसे कि इन्होंने एक एग्जांपल दिया है, फॉर एग्जांपल अ लाइन कैन नॉट बी कंपेयर्ड टू अ रेक्टेंगल, है ना. लाइन के डायमेंशंस वन डायमेंशन होता है और रेक्टेंगल को टू डायमेंशंस होता है. वन डायमेंशन और टू डायमेंशन का कंपैरिजन नहीं होगा. नॉर एन एंगल बी कंपेयर टू अ पेंटागन, एंगल और पेंटागन का भी कंपैरिजन नहीं होगा. ठीक है, तो जो मैग्नीट्यूड्स होंगे वो क्या होने चाहिए, सेम काइंड होने चाहिए. डिफरेंट काइंड के मैग्नीट्यूड्स अगर होंगे तो वो कंपेयर नहीं होंगे. ठीक है. The fourth axiom given above seems to say that if the things are identical, अगर दो things identical है, that is they are same, so then they are equal. In other words, everything equals to itself. देखो हर एक चीज से इक्वल होती है. Everything is equals to itself. It is the justification of the principle of the superposition. Okay. देखो एक चीज दूसरी चीज के ऊपर इम्पोज होती है तो सेम थिंग सुपर मतलब सुपर इम्पोज हो सकती है ना, एक दूसरे के ऊपर हम रख सकते हैं. एग्जाम 5 गिव्स द डेफिनेशन ऑफ ग्रेटर देन. एग्जाम 5 जो है वो ग्रेटर देन और लेस देन की कंपैरिजन वहां पर हो सकती है. फॉर एग्जांपल, इफ बी इज अ पार्ट ऑफ अनदर क्वांटिटी ए, देन ए कैन बी रिटन एज द सम ऑफ बी and the third quantity C. Symbolically, we can say that A is greater than B. It means that there is some value C such that A is equal to B plus C. देखो दो वैल्यूज का अगर हम कंपैरिजन कर रहे हैं तो डेफिनेटली अगर हमें उसका दोनों क्वांटिटी का अगर हमें कंपैरिजन करना है तो इस सेकंड क्वांटिटी में एक ऐसी अमाउंट होगी जो ऐड करने के बाद में दोनों क्वांटिटी इक्वल हो सकती है. ऐसा समझ में? सो देयर इज सम वैल्यू by which we can equalize. Understand? तो यहाँ पर इस कांस्टेंट वैल्यू को हमें ऐड करना पड़ेगा. तो एग्जाम 5 यही इंडिकेट करता है, द होल इज ऑलवेज ग्रेटर देन द पार्ट. दो पार्ट्स की कंपैरिजन हो रही है, यहाँ पर जो ग्रेटर पार्ट है और ये स्मॉलर पार्ट है, दोनों को हम इक्वल कर सकते हैं, पर यहाँ पर हमें एक वैल्यू जो है वो ऐड करना पड़ेगा, थर्ड वैल्यू, और we can say third quantity. ये जो टॉपिक है ये इंपॉर्टेंट है अभी, है ना. इस टॉपिक का नाम है यूक्लिड्स फिफ्थ पोस्टुलेट. ओके, एंड दिस रिलेटेड टू ज्योमेट्री. ऑलरेडी हमने देखा है कि पोस्टुलेट जो होते हैं वो ज्योमेट्री से रिलेटेड होते हैं और एक्सियम्स ये थ्रू आउट द मैथमेटिक्स यूज होता है. ओके, सो व्हाट इज द पोस्टुलेट 5? अभी यहाँ पर देखो पोस्टुलेट नंबर 1 दिया है, पहले वो देखते हैं. व्हाट इज द पोस्टुलेट नंबर 1?
A straight line may be drawn from one point to any other point. A straight line may be drawn from one point to any other point. Note that this postulate tells us that at least one straight line passes through two distinct points. देखो दो पॉइंट्स में से कितनी लाइन पास होती है? दो पॉइंट्स में से सिर्फ एक और एक ही लाइन पास होती है, ये इसका मतलब हुआ। यहाँ पर इन्होंने दिया कि स्ट्रेट लाइन में बी ड्रॉन फ्रॉम एनी वन पॉइंट टू अनदर पॉइंट, मतलब एक स्ट्रेट लाइन एक पॉइंट से लेकर दूसरे पॉइंट तक हम ड्रॉ कर सकते हैं। तो इसका सीधा मतलब क्या हुआ? देयर इज ओनली वन लाइन पासेस थ्रू टू डिस्टिंक्ट पॉइंट। इसका यही मतलब हुआ कि दो पॉइंट्स में से एक स्ट्रेट लाइन पास होती है। ओके, बट इट डज नॉट से दैट देयर कैन नॉट बी मोर देन वन सच लाइन। इसका मतलब ये नहीं होता है कि दो पॉइंट्स में से एक से ज्यादा लाइन पास होती है ना। However, in his work, Euclid has frequently assumed, without mentioning, that there is a unique line joining two distinct points. पर उसने यहाँ पर ये मेंशन नहीं किया कहीं पर भी कि दो पॉइंट्स में से एक ही लाइन पास होती है। We state this result in the form of axiom as follows. तो उसको एक एग्जाम के फॉर्म में हमने मेंशन किया। पोस्टुलेट जो था सिर्फ ज्योमेट्री के लिए रिलेटेड था, पर ये जो एग्जाम क्रिएट हुआ है ये थ्रू आउट द मैथमेटिक्स यूज हुआ है। फ्रॉम दिस पोस्टुलेट एग्जाम क्रिएट हुआ है। ओके, और एग्जाम क्या है? गिवन टू डिस्टिंक्ट पॉइंट्स देयर इज अ यूनिक लाइन दैट पासेस थ्रू देम। मतलब दो डिस्टिंक्ट पॉइंट्स अगर गिवन होंगे तो उसमें से सिर्फ एक यूनिक लाइन पास होगी। So from this postulate 1 we got this axiom 5.1. Understand? Okay, look, explanation दिया है। एग्जाम में कभी कभी आपको पोस्टुलेट दिया जाएगा या फिर उसके ऊपर से एग्जाम एक्सप्लेन करो, या फिर पोस्टुलेट नंबर 1 स्टेटमेंट गिवन होगा और उसका एक्सप्लेनेशन आपको पूछेंगे। हाउ मेनी लाइंस पासिंग थ्रू पी आल्सो पास थ्रू क्यू। सपोज दो पॉइंट से, सपोज पी और क्यू पॉइंट से, अगर आप बोलोगे पी पॉइंट में से कितने पॉइंट्स पास कितने लाइंस पास होंगे, व्हाट इज द आंसर? Infinite. क्यू पॉइंट में से कितने लाइंस पास होंगे? Infinite. 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 But how many lines can pass from P and Q? One. Yes, only One line. unique. दोनों पॉइंट्स में से सिर्फ एक ही लाइन पास होगी। Okay, only single unique line can pass from two distinct points. Okay, so only one, that is the line PQ. How many lines passing through Q also pass through P? We can say infinite. तो ये था एक्सप्लेनेशन एग्जाम 5.1 का। ओके, एग्जाम मतलब ये थ्रू आउट द मैथमेटिक्स यूज होने वाला है, और पोस्टुलेट इट इज ओनली रिलेटेड विद द ज्योमेट्री। ओके, देन पोस्टुलेट नंबर 2, व्हाट द पोस्टुलेट नंबर 2? A terminated line can be produced indefinitely. Means यहाँ पर देखो टर्मिनेटेड लाइन जो होती है उसको हम दोनों तरफ एक्सटेंड कर सकते हैं। तो ये जो कंसेप्ट है हम यूज करते हैं एज अ लाइन, दैट वी कैन एक्सटेंड लाइन एट द बोथ एंड पॉइंट्स। ओके, पर इन्होंने क्या कहा है? अ टर्मिनेटेड लाइन कैन बी प्रोड्यूस इन definitely. Okay, note that what we call a line segment nowadays is what Euclid called terminated line. जो आज हम देखते हैं terminated line उसे हम बोलते हैं line segment. Okay, as Euclid called this as a terminated line, we call it as a line segment. So according to the present day terms, the second postulate says that a line segment can be extended on either side to form a line. तो जिसको हम बोलते हैं extended at the both end, we call it as a line. Nowadays we are called as a line. So this is the postulate number 2. तो इसके ऊपर से एग्जाम क्या बनेगा? What is the exam? We can extend line at the both ends. That may be the axiom.
अंडरस्टैंड? इस पोस्टुलेट के ऊपर से हम एग्जाम यही बना सकते हैं। इसका मीनिंग क्या हुआ कि लाइन को हम दोनों तरफ से एक्सटेंड कर सकते हैं। ओके, व्हाट इज पोस्टुलेट नंबर 3? A circle can be drawn with any center and any radius. देखो एक सर्कल हम सर्कल कैन बी ड्रॉन विथ एनी सेंटर एंड एनी रेडियस। देखो एक सर्कल कहीं पर भी हम सेंटर पॉइंट ले सकते हैं और कहीं पर भी उसकी कितनी भी लेंथ हो सकती है रेडियस की, देयर इज नो लिमिटेशन। तो ये पोस्टुलेट नंबर 3 है। ओके, what is postulate number 4? All right angles are equal to one another. It is also obvious, all right angles are also equal to one another. Postulate number 5, it is very much important. If a straight line falling on two straight lines make the interior angles on the same side of it taken together less than two right angles, then the two straight lines, if produced indefinitely, meet on that side on which the sum of angles is less than two right angles. देखो इस प्रॉपर्टी को इंपॉर्टेंस बहुत ज्यादा दिया गया है। क्या है ये पोस्टुलेट नंबर 5? सपोज दिस इज वन लाइन एंड दिस इज द अनदर लाइन। ओके, और अगर थर्ड लाइन पास होती है यहाँ पर, ये देखो a straight line falling on two straight lines, like यहाँ पर सपोज यहाँ पर दो लाइंस दिया है AB and CD and this line suppose PQ. If suppose PQ line fall on this two straight lines, जैसे कि straight line AB and straight line CD, okay, then it makes interior angles on the same side of transversal. देखो अभी हम इसको ट्रांसवर्सल बोलते हैं। इंटीरियर एंगल, सपोज ये एक एंगल और ये एक एंगल, ये जो इंटीरियर एंगल्स है इन्होंने क्या कहा है, इनकी अगर हम एडिशन करेंगे इन दो एंगल्स की, टेकन टुगेदर लेस देन टू राइट एंगल्स। टू राइट एंगल्स मतलब यहाँ पर देखो 90 + 90 कितना होता है, हाउ मच? 180 डिग्री 180। इसका मतलब यहाँ पर दिया है, ये देखो लेस देन टू राइट एंगल्स, मतलब अगर इन दोनों की सम 180 से लेस होगा, ओके, इफ प्रोड्यूस इंडेफिनेटली मीट ऑन द साइड ऑन विच द सम एंगल इज लेस देन द टू राइट एंगल्स। सपोज फॉर एग्जांपल हम यहाँ पर ये 90 सपोज, आप कंसिडर करो दैट इट इज नॉट 90, सपोज इट इज लाइक दिस ओनली, है ना, ये थर्ड लाइन है सपोज, यहाँ पर इन दोनों की सम अगर लेस देन 180, इन दोनों की सम लेस देन 180, तो यहाँ पर दूसरे एंड पॉइंट के ऊपर ये दोनों ही लाइंस मीट होने वाली है, दिस विल बी द इंटरसेक्टिंग पॉइंट। तो सिंपली यहाँ पर इस पोस्टुलेट में पैरेलल लाइंस का कंसेप्ट उन्होंने डिफाइन किया है। उस वक्त ये जो कंसेप्ट था पैरेलल लाइंस का वो नहीं था, पर पैरेलल लाइंस का कंसेप्ट इस पोस्टुलेट के ऊपर से डेवलप हुआ है। अंडरस्टैंड हो रहा है आपको? जो हम आज के तारीख में देखते हैं कि when two lines are intersected by the third line, so the interior angles on the same side of transversal are supplementary, है ना। इंटीरियर एंगल्स जो होते हैं ऑन द सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल वो क्या होते हैं, सप्लीमेंट्री, मतलब इन दोनों की सम कितनी होती है, 180। ओके, ये जो प्रॉपर्टी, ये जो एग्जाम बना हुआ है ये इसी पोस्टुलेट के ऊपर से बना हुआ है। ओके, अंडरस्टैंड? For example, the line PQ in figure 5.6 falls on the lines AB and CD such that the sum of interior angle 1 and 2, ये देखो इंटीरियर एंगल 1 और 2 इनकी सम अगर 180 से लेस है on the left side of PQ, left side of PQ, therefore line AB and CD will be eventually intersect on left side of PQ। तो जहां पर इनकी सम लेस है वहीं पर वो एंगल्स, वहीं पर वो लाइंस क्या हो जाएंगी, इंटरसेक्ट होगी। ओके, अंडरस्टैंड? A brief look at the postulate
it brings to your notice that postulate 5 is far more complex than any other postulate. देखो as compared to other postulate आपने देखा होगा कि ये थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स है, मतलब जितना आप उसमें पढ़ोगे उतना आपको और न्यू थिंग्स मिलेगा। इसीलिए पोस्टुलेट नंबर 5 की अभी भी उसका अलग अलग मतलब निकालकर अभी भी उसके ऊपर एग्जाम्स बन रहे। मतलब एक पोस्टुलेट का जो स्टेटमेंट होता है उस स्टेटमेंट के ऊपर से हम अलग अलग एग्जाम बना सकते हैं। ऑन द अदर हैंड पोस्टुलेट 1 through 4 are so simple and obvious that these are taken as a self evident truth। तो उसको सेल्फ एविडेंट ट्रूथ मतलब जो स्टेटमेंट है वही उसका ट्रूथ है। इसका मीनिंग क्या हुआ, जो स्टेटमेंट गिवन है वही उसका ट्रूथ है। However, it is not possible to prove them। और ये पॉसिबल भी नहीं उनको प्रूफ करना, वो ऑब्वियस थिंग्स है। सो दिस स्टेटमेंट्स आर एक्सेप्टेड विदाउट एनी प्रूफ। तो जो स्टेटमेंट्स है उसको विदाउट प्रूफ हमने एक्सेप्ट कर लिया है, ठीक है। जो ऑब्वियस थिंग्स है उसको क्या किया हमने, without proof we accepted that universally। Because of this complexity the fifth postulate will be given more attention in the next section। तो ये जो नेक्स्ट सेक्शन है इसमें फिफ्थ पोस्टुलेट को बहुत ज्यादा वेटेज दिया गया है, इंपॉर्टेंस दिया गया है। Nowadays postulates and axioms are the terms that are used interchangeably and in the same sense। अभी हम पोस्टुलेट और एग्जाम्स को सेम कैटेगरी में रखते हैं। Nowadays postulate is actually a verb। postulate क्या है, एक verb है। when we say that let us postulate, it means that let us make some statement based on the observed phenomenon in the universe। जो भी हम ऑब्जर्व कर रहे हैं, ओके, जो भी फिनोमिनॉन्स होते हैं, जो भी हम ऑब्जर्व कर रहे हैं, तो जैसे कि हम बोलते हैं कि लेट अस एज्यूम, या फिर जो हम स्टेटमेंट कंसीडर करते हैं ऑन बेस्ड ऑन द एक्चुअल फिनोमिनन, ओके, तो वो होता है पोस्टुलेट। और सिंपली वी कैन से assumption, its truth and validity is checked afterwards। पर उसकी जो ट्रूथनेस होती है या फिर उसकी जो वैलिडिटी होती है वो चेक करना बाकी होता है, तो उसको बोलते हैं पोस्टुलेट। अंडरस्टैंड? इफ इट इज ट्रू देन इट इज एक्सेप्टेड एज अ पोस्टुलेट। पर अगर वो ट्रू है तो उसको एज अ पोस्टुलेट हम एक्सेप्ट करते हैं। अंडरस्टैंड? The system of axiom is called as consistent। जो एग्जाम की सिस्टम होती है उसे हम बोलते हैं कंसिस्टेंट। इफ इट इज इम्पॉसिबल टू डिड्यूस फ्रॉम दिस एक्सियम्स a statement that contradicts any axiom or previous proved statement, so when any system of axiom is given it needed to ensure that system is consistent। देखो जो एग्जाम्स होती है अगर वो प्रीवियस एग्जाम्स को कॉन्ट्राडिक्ट्स मतलब अपोज कर रहा है, ओके, तो हम उसको बोलते हैं कि ये कंसिस्टेंट है। यहाँ पर देखो वापस एक बार देखते हैं क्या दिया है उन्होंने। इट इज इम्पॉसिबल टू डिड्यूस फ्रॉम दिस एग्जाम्स अ स्टेटमेंट दैट कॉन्ट्राडिक्ट्स एनी एग्जाम और प्रीवियस प्रूफ स्टेटमेंट, सो व्हेन any system of axioms is given it needs to ensure that system is consistent। कोई भी स्टेटमेंट देने से पहले हमें पहले चेक करना होगा कि इस स्टेटमेंट से जो प्रीवियस एग्जाम से वो उससे डिस्टर्ब हो रहे हैं या फिर उसको कुछ कॉन्ट्राडिक्ट हो रहा है, तो वो चेक करना इंपॉर्टेंट है। अदरवाइज वो जो स्टेटमेंट होगा, वो जो एग्जाम्स होगा वो इनकंसिस्टेंट होगा। ओके, आफ्टर यूक्लिड स्टेटेड हिज पोस्टुलेट एंड axiom he used them to prove other results। देखो यूक्लिड ने जो पोस्टुलेट बनाए और एग्जाम्स बनाए उसका यूज करके उसने और बाकी के जो प्रूफ है वो प्रूफ्स उसने किए। ओके, so this remaining part we will see tomorrow। okay Okay, sir. Yes, sir.